Assalamu alaikum dear students. On Monday we have completed question 1 and question 2 from 7.2. Today we'll begin with question 3 as well as I will explain you that how math is correlated to our day-to-day life. So let's begin with first question 3. What's that question 3? You are told that 1331 is a perfect cube. It is given that it is a perfect cube. Can you guess without factorization? Means you don't have to use the method of factorization. In the previous question, we have done the method of prime factorization as the question has said. But here they have said don't use factorization. You have to guess it. Similarly, guess the cube roots of the given numbers. So let's move with the steps. What is the first step? This is your first step, that you are going to make a group of the given number. And how will you make a group? From ones you will start to make a group, and you will make a group of first 3 digit. Why 3 digit? Because we have to find out the cube root. If they will ask you for square root, then you are going to start the grouping of 2 digit. Okay. So here we'll make a group of 3 digit and then this leftover number. Understood? 1. Now, what is your second step? Here is your second step. What's that? You will check the digit at one's place in both groups. Here in this first group, what is the digit at one's place? 1. And here ones, that is 1. This is your second number. Why we have to do so? Because if you remember that property, that based on the ones digit of the cube number, we can guess the cube root or ones digit of the cube root of that particular number. And I have given you that table also. So what's that? Suppose if I'll say the cube of 2 is 8. Okay. Then in the cube of 12, the digit at one's place will be 8 only. Similar way, if I'll give you 332, then also इसके क्यूब का वंस के प्लेस पर डिजिट क्या आएगा? 8. Why? Because here the digit at one's place is 2. That's why the digit at one's place you will get 8 only. Are you getting it? Similar way, suppose if I give you 3, then what's the cube of 3? 3 3s are 9, 9 3s are 27. So what's the digit at one's place in the cube of 3? 7. तो 33 के भी क्यूब में आपको वंस के प्लेस पर क्या मिलेगा? 7. Getting? So you can take that chart which I have given you, and with the help of that you can do this easily. So let's see that. This is your first step, second step. This is your first step, second step, and now the third one. What's the third step? Cube. This is the cube. We have to find out the cube root. So suppose cube root is of 2 digit number. Okay. तो digit at one's place हमें कौन देगा? ये group 1, and digit at tens place हमें कौन देगा? ये group 2. तो group 1 हमें कैसे help करेगा? We will look at the digit at one's place. So now just think about it. That किसके क्यूब का डिजिट एट वंस प्लेस 1 है? सो सिंपली इट इज़ 1 बिकॉज क्यूब ऑफ 1 इज 1. तो यहाँ पर क्या नंबर पॉसिबल है? 1. देन व्हाट अबाउट दिस वन? सो फॉर दैट वी विल चेक दिस. इट इज़ 1 एंड 1 क्यूब इज 1. सो 1. सो आवर आंसर इज 11. Understood? Let's see the next one. Will get clear to you more. What's that? 4913. What is the first step? We will make a group, right? So
here we have made one group and here is the another group. Now we'll look at the digit at ones place for group 1 and for group 2. So at group 1 the ones digit is 3. तो अब सोचो कि किसके क्यूब में वंस की प्लेस पर आपको 3 मिल रहा है. और if you can't do it directly, then for a moment you can take that cube and cube roots chart and you can check in that. Okay, you will get it in 7. 7 sevens are 49 and 49 sevens are 343. Okay, यानी 7 के क्यूब में हमें वंस की प्लेस पर 3 मिल रहा है. उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ एक डिजिट पॉसिबल है, that is 7. Understood? Now we want this number. So for that we will check this one, that is 4. So now think that 4 जो है वो कौन से क्यूब्स के बीच में आ रहा है. सपोज 1 का क्यूब है 1 एंड 2 का क्यूब है 8. सो 4 किसके बीच में आएगा, 1 और 8 के बीच में 4 आएगा आपके पास. सो यहाँ का पॉसिबल डिजिट क्या होगा, 1 और 2. So what will we take? We will take this smaller one. So here 1. So 1 7 17 is your answer. Understood? Let's begin with the next one. Here 12,167. Here it is 7. By mistake it's written as 5. Okay. Now first step to make a group. So here 3 and now here we are having 2 digits. So 2 digits will left over. So 12,167. Now here 7 digit at ones place is 7. So think that किसके क्यूब के डिजिट वंस की प्लेस पर डिजिट आपको 7 मिलेगा. सो इट्स इजी दैट 3 3s are 9 3s are 27. यानी 3 के क्यूब के वंस के डिजिट में आपको 7 मिल रहा है. यानी जब 7 होगा वंस के डिजिट पर तो उसका क्यूब रूट में एक डिजिट 3 पॉसिबल होगा. ओके. एंड 12, तो 12 सोचो कौन से क्यूब रूट के बीच में है. सो क्यूब ऑफ 1 इज 1, क्यूब ऑफ 2 इज 8. तो 1 और 8 के बीच में तो नहीं आएगा 12. सो 3 का क्यूब है 27. सो 12 इज बिटवीन 8 एंड 27. मीन्स पॉसिबल डिजिट्स आर 2 and 3. वी आर गोइंग टू टेक दिस स्मॉलर वन, दैट इज 2. सो 23 is your answer. Understood? Similar way you can find out for this one. This is in homework. You can try to solve it by yourself. Understood? Now let's see that how math is important and why we need to study the math. Let's see that. Suppose you are going to shopkeeper to buy some things, right? So at that time what will you do? You will ask money to your mom or dad. So you will ask them some amount of money that मुझे 100 rupees चाहिए, मुझे 200 rupees चाहिए. और वो आप कैसे उनके पास से मांगते हो. आपके माइंड में एक कैलकुलेशन होता है कि मुझे इतनी चीज़ें लेनी है, उसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट इतनी होगी, तो मुझे इतने मनी चाहिए. सो व्हाट्स दैट, यू हैव यूज्ड अ मैथ इन योर लाइफ. देन सपोज आपने कोई चीज़ बाई की है, अब आपको वो पसंद नहीं है, तो आप उसे सेल कैसे करोगे. इमीडिएटली द थॉट कम इन योर माइंड दैट आई वॉन्ट टू सेल इट इन अ प्रॉफिट. यानी आपको प्रॉफिट ही चाहिए, आपको लॉस नहीं चाहिए. तो वो भी आपने कैलकुलेशन लगाया कि मैंने इतने में बाई की थी, सपोज 50 रुपीज़ में, तो मैं उसे 60 रुपीज़ में सेल करूँगा तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा. तो ये सब क्या है जो आप स्टडी कर रहे हो, वही है. इन शॉर्ट मैथ इज़ नॉट न्यू, इट्स एवरीथिंग दैट वी आर यूजिंग इन आवर डे टू डे लाइफ. सो यू जस्ट नीड टू डू प्रैक्टिस ऑफ मैथ. देन शेप्स ऑल्सो वी आर यूजिंग इन आवर डे टू डे लाइफ. देन टू सॉल्व पजल्स, टू सॉल्व गेम्स, आप अपने फ्रेंड्स के साथ ऑड इवन खेलते हो. Then some counting things also, counting games also you are playing with your friends. So what's that? That everything is math only. As well as
एट योर होम, सपोज वाइल यू वेकिंग अप, आप अलार्म सेट करते हो, तो अलार्म सेट करने के बाद सपोज आपको और भी नींद आ रही है तो आप उसे स्नूज कर देते हो फॉर सम टाइम। तो वो स्नूजिंग के लिए भी आपके माइंड में एक प्रोसेस चलेगी, काउंटिंग होगा कि मुझे 8:30 को जाना है तो मैं इतने टाइम तक सो सकता हूँ, 5 मिनट में मैं रेडी हो जाऊँगा, 5 मिनट में ये कर लूँगा। वैसे आप अपना पूरा टाइम टेबल सेट कर दो। सो व्हाट्स दैट एवरीथिंग इज मैथ। सो आई वॉन्ट टू से दैट try to do practice. Math is not very hard, it's very easy, and it's a good subject to score very nice marks. You can score 100 on 100 also. Understood? So do practice, do well, stay happy. Till then, have a good day ahead.